Hi, I'm Dave, and this is episode one of Early 20s. We're really glad that we came back. I hope आप सबने हमारा ट्रेलर सुना होगा. We are going to talk about everything in early 20s. So, first of all, I would like to tell about myself. I'm Dave, currently graduate from Delhi University and finding life technically. Today, I have Priyal Agrawal as my co-host. Hi, co-host. How are you? Hi Dave, I'm great. What about you? I am I'm really happy to start in this show. And I have two things to say to you. First, this show will be explicit, and a clean recording of this will be released, so do check that out. Second is there is no intention to hurt anyone's sentiment, race, caste, religion, profession, or organization whatsoever. So, listeners and viewers' discretion is advised. And as a guest for episode one, I have Geetanjali. She is my senior in college. She was actually, and she's a really cool person as far as I know her. Right. So, hi Geetanjali, how are you? Hi Dave, I'm doing good. How are you? I am really glad to have you over the show as a first episode, honestly. And fine, I'm cool. I'm also glad that you asked me out on this. This is something really new for me, and I'm excited to do this. As it was in the trailer about early 20s, I have a straightforward first question to you that why, like, do you choose to be on the show? Okay, I choose to be on this show. First of all, because a really beloved person of mine asked me to. And the second reason is I believe I have a lot to share, and I also believe that I have a lot that other can learn from. That was the main reason I'm here today. Someone who has recently entered her 20s and someone who is already tired of it. So I'm just looking for some good defense mechanisms, coping mechanisms, and that's all. Okay. So, as the topic of today's episode is doomed relationships, what do you think about like relationships in 20s? Like when you just pass on to 19th, कहते हैं ना the हमारे teens साल खत्म हो गए. That teen age when you crosses 19 and you get into like 20 and early 20s stage. What do you think about relationships in general? You know, in your teens, your relationships are like the most important thing for you. And when you reach 20s, or maybe I'll say, yeah, 20s, you really want to give that importance to your relationships, but you get so much tired that slowly they lose their importance. You wish if those relationships were that important to you as they were back then, but they're not. And that's only because you have discovered some, better truths about it. Be it any relationship, especially after COVID, many relationships have suffered. Be it your spouse or be it your family, it has uh, actually like brought out too much different colors of relationships that were hard to handle during those times. So I think relationships are something that you still want to give that importance in your 20s, but slowly you lose interest. I think, yeah. मतलब in short, you want to say that relationships in early 20s are kind of become complex from just वो transition इतना होता है कि वो simplicity नहीं रह पाती कहीं ना कहीं वो complexity आती जाती है. That's what you want to say, right? Yeah, and because of that complexity, you lose interest. That is like yeah, that is really true because I've observed in other people's. Yes. आपको क्यों लगता है like interest how मेरा नजरिया इस पे ये है कि complexity is not what loses the interest. I think it is the basic communication because I think relationship, any kind of relationship, that just the basis of it is always the communication, right? Yeah, that is absolutely right. But see, tell me one thing honestly. When you said that communication is the key to any relationship, do you really think that, let's just talk about you and your family. Do you think you guys really communicate? Are you like
uh, like, do you ever told them about, whatever is happening with you or whatever is going on with you? Do you really communicate with your family, your dad or your mom or your sibling, whatever? Yeah, family. See, on a general point of view speaking, इंडिया में बहुत कम, like a teenage or a 20s people who's discussing his problem. बहुत अलग बातें हैं 27 का जिसकी एज है, they can discuss about, right? क्योंकि घर वालों को कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है, सही कमा रहा है, तो उसके सुन. बट what happens is that early 20s, I think, they don't like give a lot of this. घर वालों से इतना डिस्कशन नहीं करते. आई थिंक अगर आपने अनुभव बस्सी, उसका एक टेड टॉक में शायद उसने कहा था कि याद है, जब तक वो रायता फैलता है ना, तब तक घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था, और जब वो सिमट जाता है ना, तब घर वालों को समझ आता. तो दैट इज व्हाट आई थिंक ऑफ, कि ये बात उसकी कहीं ना कहीं ये चीज सही है कि या दैट इज थिंग विच इज रियल. इसलिए शायद उसकी अगली ही लाइन में उसने ये कहा था कि दोस्त जरूर. Exactly, and that's why somewhere you give up on relationships with your family. You realize that there is no way you can ever communicate with them. There is no way they will ever understand, no matter how much, words you are using to explain your condition. So you give up there, not because it's complex, just because even the simple communication gets feels like a lot of to do. Yes, yes, that is absolutely true. But what do you think about friends? I think, it's really funny. You're talking about friends with someone who always had a hard time making friends. Even right now, I'll say I barely have 2 to 3 friends. Barely, I'll say. And I know when you reach 20s, even 2 to 3 feels like a lot in itself. So, yes, friends, they are your survival kit, honestly. They are your first aid kit. Whenever something happens bad to you, whenever you're broken down or whatever, you're feeling down, they are like the first person you ever call or you reach out to. So they're like the first aid kit, and everybody should have a first aid kit because you never know when something bad can happen. But people doesn't really have good friends, as in they must have been ditched in past, or it's not like everybody has that their first aid kit with them. Because apart from family, then what's your take on whom should they consider to? As in when they don't have friends, वो कहाँ जाए? उनका तो कोई नहीं है फिर. See, that's the thing. Just because you have been ditched in the past does not mean you will not try again. I did say this earlier before, and I say this to a lot of people that even if your trust has been broken down many a times, even though you have every single reason to not to trust anyone, if you really want to make connections or friends in this world, you have to trust again. You have to learn to trust again. Okay. So you have to heal from your past. You cannot just, it cannot happen like that. You cannot be just 30 and that I was ditched in my 20s and I cannot still make friends. That is a really stupid thing to say. If somebody has ditched you in the past, it's okay. Learn your lesson and get over it. That is the only way to deal with it. But meanwhile, you don't know what someone is suffering from. As in, maybe उस time पे जहाँ उनके कोई friends नहीं है, कोई भी नहीं है, they have suffered from that downfall in their life कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं. तो what do you think कि मतलब कुछ उन लोगों को professional help लेनी चाहिए? What's your take on that? कि if it is good taking a professional help उस sense में. Yeah, obviously. See, the very first step, if you're suffering, is to reach out for help. You have to do that if you want to heal. Everybody knows कि भाई हम कितने strong है कितने नहीं है सबको अपनी औकात पता होती है. So if you feel like that you need help, you should reach out for it because really nobody cares. कोई तुमसे आके पूछेगा नहीं रोज कि भाई कैसे हो तुम. You have to reach out.
So the very first step is to accept that you need help. एंड द सेकंड स्टेप इज टू रीच आउट फॉर हेल्प टू सी जिस किसी से भी जो भी तुमको लगता है कि मे बी अ फ्रेंड और अ सीनियर और मे बी अ जूनियर इफ योर एक्स गर्लफ्रेंड योर एक्स बॉयफ्रेंड जो भी तुमको लगे कि हाँ ये इंसान मुझे हेल्प कर सकता है रीच आउट टू देम क्योंकि तुम अगर रीच आउट नहीं करोगे you will probably have to deal with it on your own which is lot. Okay, so the talking about relationships, so what do you think about कि जो tangent आता है from 19 teenage say direct like in 20s, how does that shift the relationship with parents altogether? या सी पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप आई बिलीव ये ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनमें ड्रास्टिक चेंज आता है इन योर टीन्स दो इमोशंस होते हैं या तो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम्हारे पेरेंट्स बेस्ट पेरेंट्स हैं या तुम्हें लगता है कि दे आर द वर्स्ट पेरेंट्स when you reach your 20s as you grow up you realize you know they are they're not bad they're not good it's just their childhood trauma that is reflecting upon you right now you somewhere start to realize कि या ये भी अपने ही उससे heal नहीं हुए हैं and that trauma is starts to reflect in the behavior and all. In your 20s you start to accept them थोड़ा होता है शुरू में मुश्किल कि changes yeah you see a lot of things I don't know maybe ऐसा क्यों होता है उसी बचपन में इतनी सब कुछ नहीं दिखता हमें I was saying कि see in your teens इतना सब कुछ हम ऑब्जर्व नहीं करते थे right but as you grow up सब कुछ वही है it's the same dad it's the same mom it's the same family but you see so much now. Yeah, I think that is kind of drastic change altogether. और वो टेंजेंट कैसे आता है? आई थिंक बहुत बार इट इज लेटेंट, इट इज हिडन, हमें एकदम से पता नहीं चलता, राइट? Exactly. It's just it was always there. अब हम चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं. Now we are starting to understand them. That is a real thing, honestly. So like what is your take on कि यार how someone like किसी को अगर अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि देखो पेरेंट्स के साथ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप कम्युनिकेट ना भी करना चाहो ना, कम्युनिकेट कर लेते हो, बहुत आराम से कम्युनिकेट कर लेते हो, क्योंकि आप ना भी चाहो उन्हें मन की बात पता चलता है। पापा को नहीं पता चलेगी, मम्मी को पता चल जाएगी, मम्मी को नहीं पता चलेगी, पापा को पता चल जाएगी। Yes, I do have a cool family, but eventually I too feel at times कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि I cannot go and have a conversation with them कि सुनो ये हो रहा है मेरे साथ, because कुछ चीजें ऐसी हैं कि मेरे लिए भी awkward है उनके साथ कि I cannot talk about certain things with them. I don't know how they'll react. So there is this डर मेरे मन में भी कि मुझे नहीं पता वो कैसा रिएक्ट करेंगे इस बात को लेकर। मुझे ये भी नहीं पता कि इफ दे आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट वो कैसा रिएक्ट करेंगे इवेंचुअली। लाइक अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट that complicated relationship with me and with my parents, but things are like कि I feel like talking but I feel restricted कि मैं नहीं बात कर सकती because certain things are meant for certain people I believe. तो ये होता है कि अगर इफ इट्स मेंट कि मेरे को ये बात तो अपने पेरेंट्स से कर ही शांति आएगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो आई टॉक विद माय पेरेंट्स। बट एक कुछ चीजें ऐसी होती है कि आई कैन टॉक विद माय फ्रेंड्स, सो इट्स मोर ऑफ लाइक कि मैं अपने पेरेंट्स से बात भी कर लूँ ना एक बार के लिए हिम्मत जुटा के, मेरे को वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ही नहीं। Yeah, but there is eventually a will that everything will turn out fine, right? Yes, exactly, because they have those possessiveness उनके अंदर कि हाँ मतलब दिस इज अ टाइम लिमिट, यू नीड टू बी होम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। या फिर आई टोटली बिलीव कि मेरे पेरेंट्स बहुत चिल है, मेरे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन ही है कि बस 8 बजे तक घर में घुस जाओ। दैट्स नॉट माय केस। पर देख उसके ना हर अलग अलग ड्रॉबैक्स होते हैं कि अगर वो मुझे एक चीज की छूट दे तो दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, तो कहीं ना कहीं उस रिटर्न के चक्कर में मेरे ऊपर प्रेशर बनता है। That's true. Most of the parents kids relationships are like that. And I think Priyal, see that's what happens when you तुम किसी को अगर कुछ दे रहे हो अपना कुछ एफर्ट्स भी दे रहे हो you will expect a return right. That's what parents do. हाँ कभी कभी होता है कि भाई उनको ना पता नहीं होता कि कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए
मेरी एक्सपेक्टेशंस से दूसरे पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं ना, that is all fine because trust me they are learning too. वो भी सीख ही रहे हैं. It was, yeah. दी आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, सो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं ही हूँ इनका एक्सपेरिमेंट. अब इसमें सब कुछ देख लेंगे, बिकॉज दिस इज अ ट्रूथ. आगे के जितने भी हैं सारे दिल बी लाइक कि हाँ वी आर सीन दिस, इट्स नॉर्मल. But what do you guys think? Like, यहाँ हम अभी बैठ के अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. Do you think we guys will be a cool parent? दी अल्टीमेटली जो हमारे अंदर का इंडियन नेचर है वो कभी नहीं खत्म हो पाएगा. मतलब हम कितना भी कूल बन ले, हम अपने पेरेंट्स से कूल होंगे, बट हम इतने भी चिल नहीं हो पाएंगे जैसे मतलब लोग कहते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स आर वेरी चिल, दे आर हैविंग ड्रिंक्स टुगेदर और व्हाट एवर इट इज. तो सबका अपना अलग अलग होता है कि उनकी फैमिलीज में है कि दे कैन हैव ड्रिंक्स टुगेदर. तो इसलिए एवरीबडी हैज देयर ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, बट आई पर्सनली फील कि हम बाय हार्ट नहीं बदल सकते. Fact. What do you think, Dave? See what you're talking about, वो extreme like अलग level है उनका. There is a different class of them. But I think in a general point of view that eventually वो cool हो जाएंगे. It will take time. थोड़ा time लगेगा. अभी cool नहीं है, but eventually they'll be cool with us, right? That is true. बट वंस यू ब्रेक दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन यू ना, तो दे वो एक बार डांटेंगे, गुस्सा कर लेंगे, यही होता है. उसके बाद दे एक्सेप्ट. वो बिल्कुल ही अनएथिकल चीज हो तब तो इट्स लाइक कि वो टॉलरेट ही नहीं हो सकती. बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी डील उनके लिए है, बट वैसे कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, तो दे लर्न इवेंचुअली. So I think parents के साथ इतना complication नहीं है, because at the end of the day what do you want? You want to be sitting together and laughing, right? And I believe that many people, many families are achieving this goal of like being together and watching TV at night, right? Apart considering the financial conditions. यार आई बिलीव क्योंकि ना लोगों ने ना अपनी सिचुएशन में खुशियां ढूंढना शुरू कर दिया है. बिकॉज देर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, बट देर एग्जिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो मतलब जो जितना उनके पास है उतने में दे आर सेटलिंग इन, दे आर फाइंडिंग देयर हैप्पीनेस. Like, yeah, that is. So I believe that's what family is. You cry together, you laugh together, and that's right. At the end of the day, what you want is a warmth. और वो warmth जो family provide कर सकती है ना, वो warmth कहीं और से नहीं मिलती. No matter how much you're craving for it. So at the end of the day, no matter how bad they are, no matter how good they are, it's just the warmth you crave for. And if वो मिल रही है, then I believe you guys are a perfect family. This is really so. So moving on with parents, I think parents के साथ इतना complication नहीं होता, but at the end of the thing, conclusion यही है कि you have to talk, right? और eventually cool हो जाएंगे. Of course, unless you are not doing a that much big of a wrong thing, जो कि हर किसी का अपना अपना अलग perspective हो सकता है around का, they will get cool about it. Not at least cool, but ठीक है, they'll be start discussing about it. Okay. So moving on to the next part of it, relationship with brothers and sisters. Like I think personally, I really don't have a lot of brothers and sisters. Like my family में, there are huge of them, like in cousins. I don't have a lot of. I so what is your take on this? Like how does brothers and sisters, क्योंकि वो भी family का एक part ही एक तरीके से. How does that matter? Oh, trust me, brothers and sisters, na, this relationship will always be the love and hate kind of one. Trust me, you can never completely love them and you can never completely hate them too. And I think that's the speciality of it. That's what makes this bond really special. So I think, and I believe it's same for everyone, right? There is no one in this world that uh, feel like, oh, they, love their sibling. And same goes the opposite too. There is no one in this world who probably think that, yeah, I hate my sibling. So it will always be a love and hate relationship for me.
Yes, it is kind of a mediocre thing, and I think जो cool वाला factor parents के साथ नहीं होता, that does come into play when you are with your siblings or cousins, right? Yeah, I believe that's why siblings are important. You can talk to them, you see, the thing is you cannot bitch about your family with your friends, right? Until they are really close to you. That's when the sibling comes into play. You can bitch them about like any relative, even your own parents if you feel like. So I think siblings are really important for that. Yes, I totally agree to you on this, and like that is a golden point of it, right? So, what do you feel about friendship next? On friends. Yes, because after family, friends come into play, and there are a lot of experience with friends, right? Like somebody broke your heart, like in friends, or they let you down, and you pick up those pieces and comes up with an altogether new personality. I believe that relationships से ज़्यादा influence friendship करती है कहीं ना कहीं, because you do get a lot of exposure in a friendship rather than in a relationship to the situations, right? I think they see. I actually never realized the importance of friends until I reached my 20s. Okay, I used to think that okay, family is enough. We have enough. Indian families, they are so big that you don't actually need any connections outside, right? In every Indian family, you'll find every sort of connections. We have so much big families. So I used to think like that. What do we need friends for? But then when I reached my 20s, I realized that everybody needs a friend. I realized the importance of a friend. I truly think that like कि अगर मेरे पास maybe उस phase में एक friend ना होता, I don't know where I would have been right now. Like mentally, emotionally किस stage पे होती I don't know. So the credit like for what I am today actually goes to my friend. So I think friends are really important and everyone should have at least one. See, people these days focus more on quantities. You कॉलेज में हम एंटर करे थे, देयर यूज्ड टू बी लाइक ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, कि क्या कहते हैं, 10-12 लोगों का ग्रुप है, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड इफ यू आर एनीवन लाइक मी ऑलवेज हैड अ हार्ड टाइम मेकिंग फ्रेंड्स, यू विल बी जेलस ऑफ देम, राइट? कि वो 12-12 लोगों के ग्रुप में खाना खा रहे हैं, तुमको एक नहीं मिल रहा खाना खाने के लिए साथ में, इट गोज लाइक दैट. शुरू में होता है वो जेलसी फैक्टर, but then when you know reach third year or when you're about to graduate, you realize that trust me, a group is never better. ठीक है, वो 10-12 लोगों का जो ग्रुप होता है, so called friends, that is, I think, the worst thing anyone can have. Okay, so you realize कि no, तब जब तुम अपने 20s पहुंचते हो, then you realize कि no, it is not about the quantities, it's just एक भी हो पर ढंग का हो. So I think तुम लोगों के साथ भी ये phase आया होगा. What was your like when you guys were in first year? How did you feel about this? दी जैसे अब हमारे फेब्रुअरी में कॉलेज एक्चुअली स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि 1.5 से 3rd सेमेस्टर तक तो हमारे ऑनलाइन थे. बट नाउ दैट हम कॉलेज जा रहे हैं, आई हैव सीन देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स जो 10-12 लोग हैं, एज यू हैव सेड, साथ बैठे खाना खा रहे हैं, चिल कर रहे हैं. तो somehow I feel they are not bad because you have a group to chill with. You have a group to be like कि हाँ मेरे पास कोई नहीं होगा तो I have them. मतलब that's not like कि आपकी heart to heart feelings है, वो कभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि there are 10 to 12 people और आप 10-12 लोगों से अपना दिल का कनेक्शन नहीं बना सकते. पर somehow I feel कि वो जो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप, because I have been a part of those groups, तो उस ग्रुप में ये होता है कि you have people with you, you can be with them, you have a great time pass. आपको कोई कमी नहीं है कॉलेज के अंदर, बिकॉज अदरवाइज यू फील लोनली. क्योंकि कॉलेज के अंदर होता ही क्या है, और या तो आप क्लास ले लो या फिर आप बंक कर लो. अगर आप बंक करो तो यू नीड टू हैव पीपल बाय योर साइड. तो उस 10-12 लोगों के ग्रुप के अंदर एटलीस्ट आपको ये होता है कि आपको मजा आता है, if that group is not toxic. By the third year, you realize कि that 12 or 13 people जो वो ग्रुप था ना, trust me or not, but
जो बाद में कहते हैं ना सांप निकलते हैं ना, जो वो उसी ग्रुप में से निकलते हैं। सो लेटर ऑन गलत लोगों में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फिर में ये सब चीजें बहुत वो लगती हैं। ओके। नहीं, वो बात सही है, बट आई फील लाइक कि नहीं, बट आई फील लाइक कि आपको फिर अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए कि इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ 10 to 12 पीपल ग्रुप, तो मैं एक्सपेक्ट ही क्यों कर रही हूँ कि वो मतलब मेरे साथ जिंदगी भर रहेंगे, बिकॉज वो तो टेम्पररी है। वो सबको एक अंदर से होता है कि ये टेम्पररी है, ये अब कॉलेज खत्म हो जाएगा, थर्ड ईयर हो जाएगा, सब हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता कौन क्या है, कौन कहाँ चला गया है। सी दैट्स व्हाट वी नो राइट नाउ। जब तुम किसी के साथ 2-3 साल अपने ग्रेजुएशन ईयर्स के स्पेंड करते हो ना, you get attached. Okay, I believe not everybody is smart enough to not get attached in their first year, right? Attachments बहुत जल्दी हो जाती हैं। थर्ड ईयर तक जाते जाते अकल आती है कि ओ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, दिस शुड हैव बीन अ प्रोफेशनल सर्कल। वो मेरा जो टाइम पास वाला ग्रुप था वो टाइम पास तक ही रहना चाहिए था। आई डोंट नो, मे बी यू आर समवन हु इज मतलब जो आसानी से अटैच नहीं होता। आई डोंट नो, मे बी इट इज लाइक दैट विथ यू। No, I do get attached very easily. मैं ऐसी हूँ कि I cannot judge people. It's more of like कि कोई मुझसे प्यार से बात कर रहा है, तो इट्स मेरे लिए वो बहुत सही है, वो बंदा सबसे बेस्ट है। और अगर मुझसे गुस्से से बात कर रहा है, कोई बेकार तरीके से बात कर रहा है, तो I'll be like कि बेकार है इंसान। मैं इस टाइप की हूँ। बट स्टिल somehow I feel मतलब पता नहीं, ये मेरे को या तो पहले रियलाइज हो गया है कि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट 10 to 12 लोगों का ग्रुप, एंड आई फील लाइक कि ठीक है, मुझे इतना पता है कि कि ये मेरे साथ रहने ही नहीं वाले कॉलेज के बाद। आई नो एक दो लोग जो मेरे साथ रहेंगे कॉलेज के बाद, whom I can chill after college। Yeah, see, and second thing is, I believe तुमने अपने first second year online किया है, right? हाँ जी। Yeah, that creates a huge difference. यहाँ से चीजें काफी नहीं सही में, क्योंकि वैसे मैंने भी I've spent half of my graduation years on computer, so it's kind of same for me. But this is not something I've experienced on my own. This is something I'm telling you, which my friends have experienced. So they used to have this. Okay, I will surely. Okay. I cannot think name. Okay, so they used to have this huge group of 12 to like 15 friends, and they were like this symbol of like cool. If you want to be cool, you gotta join that group. It used to be like that. So when I entered college, it was like that for me too. I was, देखो, तो ये होता है ना कि एक ओवर हाइप्ड ग्रुप होता है कॉलेज के अंदर कि हाँ, अगर आपको थोड़ी बातचीत रखनी है कॉलेज के अंदर, तो आप उस ग्रुप के अंदर चले जाओ। yeah, exactly. Yeah, but when you spend 2 years or 3 years around with such people, you get attached, and that's where problem comes. तब तुमको realize होता है कि no, they were not friends. So then you realize कि okay. And see the thing you talked about कि college के बाद touch में नहीं रहेंगे, so you cannot judge a friend by that, I believe. Do you think a friend is someone who stays in touch even after college? No, see, there are very limited people who stays in touch even after college, और उसमें भी you are very selective कि एक्चुअली में वो रियल है कि नहीं है, बिकॉज जिसने एक बार ठोकर खा ली है वो थोड़ा टाइम तो लेगा ना हील होने में। तो यू डोंट हैव दैट गारंटी कि उसी कॉलेज में से, उसी बच्चे में से, क्यों, इफ यू कैन ट्रस्ट देम और नॉट। Yeah, and that's what I meant कि first year में जो भी तुमको लगता है ना कि oh, this is what friendship looks like, this is what a group of friends looks like, वो सब बदल जाता है थर्ड ईयर तक आते आते। देन यू रियलाइज रियली कि हाँ फ्रेंड होता क्या है, एंड देन यू रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस। एंड समटाइम्स कुछ लोगों को ये भी रियलाइज होता है कि ओके 3 साल निकल गए एंड आई डू नॉट हैव अ फ्रेंड अप टिल नाउ, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि तुम गलत लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो। सो आई दिस इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ द जूनियर्स, इतनी जल्दी डिसाइड करने से अच्छा कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, डू नॉट डू दैट। टेक योर टाइम इन इन्वेस्टिंग पीपल। प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाना कॉलेज में बहुत ज़रूरी है, राइट? सो मेक दैट प्रोफेशनल कनेक्शन, बट पर्सनल बनाने से पहले टाइम लो, सोचो, एंड देन इन्वेस्ट इन पीपल।
Honestly, this is my realization. I've been into groups. My senior know me, right? Yeah, I was into many yeah, yeah. groups. I was center of many groups, and I went through the whole shifting that lockdown thing, right? क्योंकि लॉकडाउन में इतनी किसी से बात हुई नहीं. So when I went to college back, तो it was a lot of distance, a lot of difference, right? I went to college. Really, you know about. I used to roam alone, lonely, right? Like akela ghumna. You know, you saw that phase, right? Yes. But somehow I haven't seen तेरा पहले वाला phase जब you have been part of groups. तो मेरे लिए it was more of like कि you are someone who's extrovertly introvert. Like a loner. No, not a loner. Loner मैं तुझे नहीं कह सकती because तू हर किसी से बात करता हुआ चलता है. Okay, so ये मेरा realization रहा है. Like I've been into both phases. What I want to be is one or two people around me. There are people I know are my people. I don't want to be a loner. I don't want to be a center. Because I've been through both. और दोनों में ही आखिरी में यही realization रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है. बड़े ग्रुप्स में रहने के बाद भी जैसा आपने डिस्कशन करा और अकेले में रहने के बाद भी ये चीज़ बहुत आती है कि तेयर थॉट्स suck you from inside. As Priyal said, I am extrovertly introvert क्योंकि वो टर्म मुझ पे परफेक्ट है बट हाई चांसेस आर कि वो हर किसी पे वैलिड ना हो. But with that also I've saw a phase where I'm just sitting alone and I want to tell to all of the people it is fine to be alone. It is not bad because तुम एक पूरे ग्रुप का पार्ट भी नहीं रह सकते. तुम नहीं संभाल पाओगे ना तुम अपने अकेलेपन को ज़्यादा देर तक संभाल सकते हो. So that's why as the starting कि you want one or two people, those are around you, those are your people, right? So okay, moving on to the next, the romantic ones. Have you ever got a rose in the college? The gulab. A rose. A rose, yes, a gulab. Mm, that is so sad. No, never in my 20 years life. Never. So, what is your take on this term relationship? From where, like, we come from the 19s, where some people are like, I don't need one, or I'm just too cool to be in relationship, and some people are like always bragging about it, right? So, what's your take on that? And following up to, we'll also be talking about quote soulmate unquote. Okay. See, I believe this is what I have always said that, if you ever get a chance to experience love in your life, no matter at what age, okay, you should accept it. You should do it instead of making calculations, instead of thinking about the rights and the wrong. Just accept it. Just give it your all. But yeah, age factor does come in, right? I'm not expecting you know, a eighth grade kid to be in love. So if you know what I mean. Okay. So I was saying, yeah, yeah. That's what I think. When हम लोग जब teens में होते हैं ना अपने, we have this conscience that हमें हर calculations करनी होती है. या तो कोई चीज़ को हम सीधा classify कर देते हैं कि या तो ये चीज़ गलत है या चीज़ सही है. हम सही चीज़ करेंगे, हम गलत चीज़ क्यों करेंगे? But in your 20s, I don't think we really care about that, right? So I think 19 is not a age to make calculations about a relationship. Yeah, that is true कि तुम किसी relationship या किसी person में अगर अपने time and efforts invest कर रहे हो, you'll expect a good return, which is a really normal thing to do. But when you're 19, you should not be caring about marriage. That is really not a age to be giving a damn about that thing. So when love comes to you, be strong enough to accept it. Give it your all. That is all I have to say. And see, there's this thing with us, see, I'm saying this in a very generalized way, irrespective of कि वो second person तुम्हारा friend है और girlfriend है, boyfriend है. I know we humans are greedy. Okay, हमारी life में कोई भी आता है, सबसे पहला thought तो हमारे मन में यही आता है कि ये जब जाएगा तो क्या होगा. The moment we start to get close with them, ये thoughts आने लग जाते हैं. There is this one thing that I'd like to say to all of the audience too,
that you know you don't have to tag your every relationship with the term forever. That is impossible. Okay, हर चीज को forever तक ले जाने की कोशिश मत करो. तुम्हारी लाइफ में कोई फ्रेंड आता है, मे बी वो फ्रेंड तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारा जो द टाइम टुगेदर यू गाइस हैव मे बी 6 months or a year or 2 years. द थिंग इज जितना टाइम उस इंसान के साथ तुम स्पेंड कर रहे हो ना, मेक श्योर कि वो टाइम तुम पूरा एंजॉय कर रहे हो. ओके, इंस्टेड ऑफ वो फॉरएवर वाले प्रॉमिसेस बनाने हैं कि छोड़ो, फ्यूचर में जो होगी वो देखी जाएगी. तुम्हारे हाथ में नहीं है, वेल. ओके, तो खुद को कंफ्यूज मत करो इससे कि या यू कैन कंट्रोल इट. यू रियली कैन नॉट कंट्रोल व्हेन अदर पर्सन विल लीव और व्हेन यू विल लीव. तो एंजॉय द टाइम. तुम्हारे पास जिस इंसान के साथ जितना टाइम है उतना टाइम एंजॉय करो. कल जो होगा वो देखी जाएगी, एंड आई एम श्योर आज कोई है तो कल भी कोई ना कोई होगा. So do not tag everything with forever. That is really so true. Like everybody is not meant till forever, so yeah, think and keep that in mind. Okay, moving on to the communication is very important part of the relationship. It what makes the relationship alive, right? I think it is very important. So what's your take on that? Because हम हर किसी का किसी ना किसी सुन ही रहे होते हैं कि यार बात नहीं हो पा रही है, वो गुस्सा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, right? So people are like there is communication gap in between them. So what is your take on that? Sometimes I feel like it's an irony. आज की डेट में हमारे पास we have so many means of communication and still we are struggling with communication. I often wonder, how those old age couples used to work out things. I actually wonder that sometimes. तब तो there were no phones, there were no, barely any mails and all. But still they were able to work out things. And right now we have itna kuch hai, but still we are struggling with communication. And I think the problem lies within us. You know, talking about when in a relationship, well, वैसे you have experienced this, right? I'm sure तुमने भी कहीं ना कहीं communication problem face करी होंगी, and तुमको भी यही लगा होगा कि मेरी साइड से communication problem नहीं है, सामने वाली साइड से communication problem है, right? यार देखो, ये तो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है ना. अब कभी कभी ऐसा होता है बॉयज़ का दैट ओके यार हमने तो कुछ करा ही नहीं है, देन व्हाई शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, राइट? तो और द सेम गोज़ विद गर्ल्स. बट गर्ल्स का थोड़ा ऐसा होता है कि इसे पता होना चाहिए व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, राइट? तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? Yeah, I agree. It's true. Like, why this thing is there? See, I'm sure. Yeah. नहीं, I was saying, हर लड़की में ये होता है कि instead of communicating directly, एक फेज हमें आता है कि यार इसको पता होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं बात कर रही. ओके प्रियल, आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी हुआ होगा. वीट अब यूजुअली लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम आती है. व्हेन वी गेट मैड एट देम, दे आर लाइक प्लीज मुझे बताओ तो सही क्यों गुस्सा हो या क्यों बात नहीं कर रहे हो. एंड वी आर लाइक ब्रो, तुम्हें नहीं पता है क्या कि तुमने क्या किया? तुम्हारे साथ आया नहीं आया ये फेज? Yeah, I've been through that. Because देखिए, I believe कि there is certain expectations we women have कि इसे तो पता होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं. फिर it should know कि what's the problem. Exactly. And अच्छा, Priya, let's say कि you have this friend, let it be suppose you and I are friend, okay? और मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, या मैं सीधे मुंह बात नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हो, ताने वाली टॉन्ट वाली लैंग्वेज है, वैसा कुछ है. तुम पहली चीज क्या करोगे? लाइक इफ इट्स अ बॉय, आई नो वो पहली चीज क्या करेगा, वो मुझसे पूछेगा कि भाई क्या गलती की है मैंने, ये तो बता दे क्या हुआ है. बट तुम क्या करोगे? अगर आप being a girl आप मेरे फ्रेंड हो तो इट्स मोर ऑफ लाइक या तो मेरे को समझ आ जाएगा कि आप क्यों गुस्सा हो.
There's this one perspective. Yes, क्योंकि दीदी अल्टीमेटली पता होता है ना सामने वाले की साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, बिकॉज अगर मैं किसी जगह हूँ, मैं किसी से नाराज हूँ, तो आई एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड खुद से कि एक सेल्फ रियलाइजेशन वाला फेज होता है कि सामने वाले को पता होना चाहिए क्या चल रहा है, एंड ये बिल्कुल ट्रू है. Yeah, exactly. You will do a self reflection, right? तुम खुद के एक्शंस पहले वो या एनालाइज करोगे कि हाँ एग्जैक्टली यू नो दैट्स व्हाट वी गर्ल्स डू. आई बिलीव हर लड़की यही करती है. तुम अगर मुझसे बात नहीं करोगे, दो सीधे मुंह बात नहीं करोगे, या मे बी समथिंग इज ऑफ, द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई रिफ्लेक्ट ऑन माई ओन एक्शंस कि मेरे ऐसे कौन से वर्ड्स थे या मेरे कौन से ऐसे एक्शंस थे, यू नो, जिससे ये कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. बट आई एम डैम श्योर लड़कों के साथ ये केस नहीं होता है. यू नो दे थिंक oh we'll communicate, that is what we should do, that is the mature thing to do. No baby, self reflection is a mature thing to do. Most of the time तुमको नहीं पता होता है तुमने क्या गलत किया, even though something which is very obvious to a girl, right? हमें लगता है कितना obvious है यार, ये तो उसको पता ही होना चाहिए कि इसकी ये चीज मुझे hurt कर गई है, ये चीज उसने गलत बोली है. that is very obvious to girls. लेकिन boys के लिए वो चीजें obvious नहीं होती. I'm not saying कि it's their mistake. Yeah, दी बट समटाइम्स आई बिलीव कि उनको पता ही नहीं होता, दे टेक थिंग्स सो लाइटली कि उनको पता ही नहीं exactly. होता एक्चुअली में व्हाट्स द प्रॉब्लम. मतलब आई डू फील हेल्पलेस मेरे मेल फ्रेंड्स पर कि यार मैं देखो कैसे समझाऊं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर उसको मैं बता दूंगी तो पॉइंट इज मैंने ही तेरे को बता दिया प्रॉब्लम क्या है, देखो खुद को रियलाइज ही नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ नाराज होने का. Yeah, exactly, exactly, exactly. You know, I don't know कि you know it when two males are friends or best friends, I don't know उनके बीच में communication कैसी होती है या कैसे नहीं होती. But see, this is a fact कि you know जैसे friends एक दो लड़के होते हैं या जैसी friends दो लड़कियां होती है, वैसी friendship एक लड़का और एक लड़की के बीच में नहीं होती. Do you guys agree or not? आई डू हैव गुड मेल फ्रेंड्स, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती इस चीज के ऊपर, बट अल्टीमेटली मोस्टली. नो, मैं उस सेंस में नहीं कह रही. सुनो, मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि सी यू नो जो जैसे दो मेल फ्रेंड्स में देर आर सर्टेन रूल्स ऑफ फ्रेंडशिप. तुमने देखा होगा जब दो लड़के आपस में फ्रेंड्स होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता हो कि तीसरे की बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. देर आर सर्टेन रूल्स, देर इज अ ब्रो कोड, राइट? एंड जब दो ऐसे ही सिमिलरली जब दो लड़कियां फ्रेंड्स होती हैं, देर आर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, उनका अलग तरीके से चल रहा होता है या जो भी है. ठीक है, बट आई बिलीव जब एक लड़का और लड़की आपस में फ्रेंड्स होता है ना, लड़के के माइंड में होता है वही एक्सपीरियंस, वो लड़के वाला एक्सपीरियंस, और लड़की के माइंड में होता है वो लड़के वाला एक्सपीरियंस. लड़की को लगता है कि क्या कहते हैं, समझ जाएगा ये क्या गलती है इसकी, और लड़के को लगता है कि मुझे बता ही देगी कुछ गलत होगा तो, बिकॉज दैट व्हाट आई बिलीव मेल फ्रेंड्स डू विद ईच अदर, राइट? कुछ गलत होता है तुम बोल देते हैं मुंह पे. दी बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमें जाकर बताना पड़ता है कि सुन तेरी ये गलती है और तूने ऐसे कर दिया, फिर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होती है. या ये तब होता है ना जब व्हेन वी आर टॉकिंग विद आवर मेल फ्रेंड्स, ये मेल फ्रेंड्स के साथ होता है. तुम सच्ची बताना, कभी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ ये प्रॉब्लम आई है कि तुमको उसको बताना पड़ा हो? नहीं नहीं, क्योंकि दीदी अगर कोई मुझसे भी नाराज है ना, तो मुझे पता है कि मैंने क्या गलत करा है, चाहे मैं अपनी ईगो में या अपने उसमें एक्सेप्ट ना करूं, बट समवेयर इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स आई नो कि मैंने क्या गलत करा है. But when it comes to males, I feel they are totally clueless. If they are saying they don't know, that totally means कि उनको पता ही नहीं है. They don't even have an idea कि उन्होंने क्या गलत करा है. एग्जैक्टली, दे आर क्लूलेस. एंड देव, तुम बताओ मुझे, तुम लोग क्लूलेस क्यों होते हो? See, uh, there can be scenarios, so I cannot comment on anything. But I would just like to ask you guys, कि, like, what a boy should do. Apart from कि admitting, चलो वो भी I think कुछ लोग admit कर लेते हैं कि ठीक है, this may be a mistake. Security में भी नहीं दे सकता.
But according to scenario, this may be a mistake. So what is your take on that? कि क्या करना चाहिए boys एक male को considering this as a scenario in general? See, I believe सबसे पहला जैसे मैंने बोला, you guys should really do a self reflection. जब एक लड़की नखरे दिखा रही होती है, या सीधे तरीके से बात नहीं हो रही थी, there it clearly means there is something wrong that you have done, and most of the time you're clueless. Okay, so तुम थोड़ा self reflection करो. मे बी होता है इतनी चीजें जो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, मे बी नेक्स्ट पर्सन के लिए बहुत मैटर करती है. तुम्हें लगता है कि इससे किसको क्या ही हर्ट होगा, but sometimes we girls are sensitive, and you know that. And I do not even blame girls for that. There comes a period when we are literally oversensitive to everything, which, so it makes sense according to me. So I think what guys should really do is a self reflection. जो वो आता है ना कम्युनिकेट वाला स्टेप, आई बिलीव दैट इज सेकंड स्टेप. पहला स्टेप है तुम खुद एनालाइज करो कि मैंने क्या गलत किया है, एंड देन कम्युनिकेट. क्योंकि तुम सीधा पूछोगे, यू गाइस आर लाइक टीचर इनकी कॉपी ले और वो रेड पेन से सर्कल बना बना के इनको स्पेलिंग मिस्टेक दिखाए, तभी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करेंगे. आई बिलीव गाइस आर लाइक दैट. तुमको खुद कॉपी खोल के पढ़ने में नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है, या तुम लोग कॉपी होमवर्क कर लिया, बुक वो करके सबमिट कर दिया, अब टीचर देखेगी जहाँ मिस्टेक हुई है नहीं हुई है उसकी दिक्कत. ऐसा कुछ है? I think ऐसा सिनेरियो तो नहीं है, बट या वी डू कहीं ना कहीं ये होता है कि बॉयज इन अ जनरलाइज्ड वे कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई एम नॉट सेइंग इट टू एनीबॉडी एल्स बट एनीवन, बट इन जनरलाइज्ड वे देयर आर लाइक काइंड ऑफ थिंग्स. जैसे सुनने में भी बहुत बार आता है कि यार आई एम ट्राइंग फॉर दिस सो हार्ड बट ही इज नॉट ट्राइंग, ही इज नॉट पुटिंग एफर्ट्स इन इट. आई थिंक कहीं ना कहीं दिस ऑल टर्न्स आउट टू बी अबाउट एफर्ट्स. See, this is, I believe this is completely a different topic. अगर तुमको लगता है कि सेकंड पर्सन से वो एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, then I think you should really talk about it. क्योंकि जहाँ बात एफर्ट्स की आ जाती है ना, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि कोई बंदा सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा भाई. क्योंकि हर किसी को लगता है वो अपना 100% ही दे रहा है, राइट, अंटिल तुम उसके पास जाओ और तुम उसको बताओ कि नो, दिस इज नॉट 100%, या मुझे और चाहिए. तो जहाँ बात एफर्ट्स की आती है, इफ एनी वन इन अ रिलेशनशिप थिंक्स कि नो, एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं उतना जितना मैं दे रही हूँ, देन आई थिंक कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप. तुमको सीधा बात करनी चाहिए, बजाय कि वेट करना कि सामने वाला बंदा समझेगा. Okay, so communication and efforts go side by side, right? Yeah, I believe if you're not satisfied with somebody's effort, let them know, and I think that is the only way they'll come to know and they can work on it. Thank you for joining us on this episode. Produced, edited, and directed by Devraj Verma, co-starring Priyal Agarwal, featuring Geetanjali Bhatt. Listen in the next episode. Wow, that is great. So like how the story started, like how did you felt that early 20s is just you are just in 20, right? You just went 21, and how do you felt, like what was that lot in that 20 and 21, the 1 year? You can say that 20s is a huge reality check, and it comes at a time when one is absolutely not ready for it. The more unicorny and rainbow your 19s are, the more I'd say thunderstormy or dinosaur your 20s are. It's a huge reality check. With me, it was also the same. I completed my graduation in 20s, and then I realized that all of a sudden, I have to face life now. Nothing like my teenagers when I was in school. I had nothing to worry about. I actually have to deal with life now, deal with my next steps, also thinking of consequences and all. So 20s is a huge reality check, and where one is absolutely not ready for it. No one wants us about it, right? Nobody wants us as well. So a lot happened
Yes, some of it is related with my professional life, some with personal self. But concluding it all, it was a huge lesson.